Hi Super Achievers. Today's video is continuation video of last video. Last video में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द फ्यूचरिस्टिक कैरियर प्रेडिक्शंस. कौन कौन सा कैरियर क्लस्टर्स में जॉब क्रिएशन एंड डिमांड्स ज़्यादा रहेगा. ऑलरेडी हम लोगों फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं 3 कैरियर क्लस्टर्स, दैट इज IT का हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी एंड अनदर वाज बायोटेक्नोलॉजी. आज हम लोग अनदर 3 और 4 आई ट्राई टू कवर द कैरियर क्लस्टर्स जहां पर जॉब्स क्रिएशन ज़्यादा रहेगा. इसलिए अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिए 8 से 10 मिनट. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. लेट्स सी द फर्स्ट कैरियर क्लस्टर ऑफ टुडेस वीडियो. वो है दैट इज ग्रीन एनर्जी, EV एंड क्लाइमेट कैरियर्स. ग्रीन एनर्जी, यू नो, द जॉब रोल्स विल बी लाइक solar installation engineers, solar installation technicians and maintenance engineers. Similarly for wind power engineers, wind power installation engineers and sustainability manager for climate change. Every organization में sustainability managers का requirement है. Why, you know, they analyze the data, energy data analyze करते हैं, जैसे energy and other environmental factors like water consumption हो गया, energy consumption हो गया. By that, they have to analyze whether they are contributing to the environment or damaging the environment. So ये बहुत critical roles है. And you know, wind power energy का जो service requirement, service personnel requirement in USA, that is going to increase around 49%. And solar panel installation engineers, that will increase around it will be 42%. See, ये जो wind energy है, there will be manufacturing, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. 4 एरियाज है जहां पर आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट रहेगा, फ्रॉम टेक्नीशियंस टू इंजीनियर टू मैनेजर टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द ऑपरेशन जो रहेगा. सो एवरी लेवल में रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा. एंड इंडिया में जो जॉब क्रिएशन रहेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में, इट विल बी अराउंड 44 लाख जॉब्स, इंक्लूडिंग ऑल टेक्नीशियन से लेके आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सेल्स में, मार्केटिंग में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में 44 लाख जॉब्स. एंड वी आर गोइंग मैसिवली ऑन सोलर एनर्जी, ऑल्सो न्यूक्लियर एनर्जी. विंड पावर एनर्जी में वी आर गोइंग लिटिल बिट स्लो, बट सोलर एंड न्यूक्लियर में वी आर गोइंग इन मैसिव वे. सो सुटेबिलिटी क्या रहेगा आपका, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका स्ट्रीम, जनरली यू गो फॉर PCM इन योर 11-12 PCM stream and go for a engineering degree if you want a better career growth. That means from engineer you can become manager, then you can head of department, or you can grow like anything. That engineering stream will be mechanical, electrical, electronics. ये सब main core engineering area है. You can do diploma also for lower level positions, IT level also for technicians levels. And the skill level आपका पास में क्या होना चाहिए, electrical basics and solar installation टेक्निक, IoT, सेफ्टी. अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी इज फर्स्ट. एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन सुपरवाइजिंग, ये सब स्किल्स आपके पास में होना चाहिए. प्रोजेक्ट, छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं व्हाइल यू आर इन योर एकेडमिक्स. सोलर कॉस्ट कैलकुलेशन, मतलब एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और एक हाउ टू शो द कस्टमर सोलर पैनल लगाने से आपका कॉस्ट कितना रहेगा फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनर्जी कंजप्शन. स्कूल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट एक बना सकते हैं आप. EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना सकते हैं. छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं टू शो योर स्किल लेवल इन GitHub. सैलरी पोटेंशियल, इनिशियल सैलरी पोटेंशियल as of now it will increase further. As of now it is 2.5 to 7 lakhs per annum. It will see, if you are looking a broad way, 10 years down the line, this 2.5 become 7 lakhs. Starting will be 7 lakhs per annum to around 15 lakhs per annum. This is the starting level. And generally these are the field jobs. It is not that IT jobs you just sit on the table and just work. These are requirement are on the field jobs. Second, आज का जो second career cluster है वो है robotics, drones, defense and smart manufacturing. डिमांड तो रहेगा. जनरली इंजीनियर्स इन ऑल सेक्टर्स, रोबोटिक्स हो गया आपका, ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस हो गया, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. जनरली ड्रोन्स मीन्स ड्रोन्स इंजीनियर्स
ड्रोन्स पायलट्स, ड्रोन्स मेंटेनेंस, जस्ट मैं बोल रहा हूँ मैन पावर जो रिक्वायरमेंट रहेगा एवरी स्टेज में मैन पावर रिक्वायरमेंट्स रहेगा। IoT इंजीनियर्स फॉर स्मार्ट फैक्ट्री, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट फैक्ट्री स्पेशलिस्ट। लेकिन डिफेंस में ऑलरेडी आई हैव मेड ए पर्टिकुलर वीडियो ऑन डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ड्यू टू वी आर गोइंग मैसिव वे इन मिसाइल प्रोडक्शंस एंड आपका जो क्या सैटेलाइट प्रोडक्शंस, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एवरीथिंग। एंड व्हाई दिस विल इंक्रीज? बिकॉज ऑफ व्हाट डाटा एक्चुअली सेइंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, robotics and automation are expected to transform business by 2030. You know, recently one news has come. A girl who was dreaming to become a doctor has become a robotics and automation engineer in Rolls-Royce, which is actually a multinational company. She is in her third year of robotics and automation engineering, but she already got the offer around 72 lakhs per annum ka package. And suitable streams, generally you go for again physics, chemistry, mathematics in your 11 and 12, track G, or you go study BTech in any engineering college. स्किल लेवल आपको डेवलप करना पड़ेगा, जैसे हो गया स्काडा हो गया, सेंसर्स हो गया, PLC हो गया, CAD हो गया, IoT हो गया. During your academics, do small projects to show your skills. That girl has shown her skills because she asked for the internship in Rolls-Royce, but they told that first you have to prove yourself. So they gave him some tasks to complete in 1 month, but she could complete it in 1 week. That way, she was given many tasks. Then the interview and she got the offer. That way, if you are doing something, do it focusedly and 100%. The projects you can do like farm spraying drones to show your project capabilities or technical capabilities, skills. Smart irrigation system. ये सभी small projects आप कर सकते हैं. And indicative salary present as of now it is 3 to 8 lakhs per annum. By 10 years down the line, may double it. So this is your second career cluster. Now let us see the third career cluster. Again it is a emerging and demand तो रहेगा ही रहेगा. Semiconductor, electronics and embedded systems. Best roles क्या रहेगा? VLSI engineers, chip design engineers, embedded system engineers, manufacturing engineers, PCB design engineers. इसका डिमांड काफी इंक्रीज होने वाला है because you know India has already taken a target to produce the semiconductors in India. Target is chip self-sufficiency target क्या है from this semiconductor manufacturing 15 to 25% by 2030 and 35 to 50% by 2035. Recently, now actually we are importing all the chips from outside, and that's why this India Semiconductor Mission 2.0 aims to deepen the domestic manufacturing of these semiconductors. Semiconductors generally ये यूज होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में. So capability and global improve कर रहे हैं everywhere in equipment, materials, everywhere manufacturing. And जो अगर आप इसमें डेवलप करना चाहते हैं आपका करियर, do again go for PCM stream, do BTech in electronics and electricals. This will help you to find the job very fast because one of my friend, he is in embedded system engineers. He is working in LG. Any equipment manufacturing, any equipment, electronic manufacturing, any equipment, there are chips. And skills level, जब academics कर रहे हैं, you show your skills, VLSI, embedded systems, because embedded system में coding भी होगा, machine level codings भी होगा, digital coding जो बोलते हैं वो सब रहेगा. Those skills you show by small projects like smartphone controller, then sensor devices and PCB design. Entry level salaries will be around 4 to 10 lakhs per annum. इसमें थोड़ा ज़्यादा है because ये थोड़ा emerging and demanded area है. So अगर आप इंटरेस्टेड है, go for PCM stream, do your engineering and develop the skills. Company is not only looking for your certificates, they are also looking for your skill level. तो ये हो गया आपका
थर्ड आपका जो थर्ड कैरियर क्लस्टर, द फोर्थ कैरियर क्लस्टर इज योर क्लाउड डेटा सेंटर्स एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस, डेवऑप्स। जो रोल्स रहेगा, क्लाउड इंजीनियर्स रहेगा, डेवऑप इंजीनियर्स रहेगा, डेटा सेंटर इंजीनियर एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स, ये रहेगा। एंड यू नो एवरीथिंग, एआई सिस्टम हो गया, डिजिटल सिस्टम हो गया, एवरीथिंग इज इन नाउ इन क्लाउड, ये भी एक्सपांशन हो रहा है। एंड डेटा सेंटर्स, लॉट ऑफ डेटा सेंटर्स इज बीइंग इंस्टॉल्ड, प्लान टू इंस्टॉल इन इंडिया। सो डिमांड, who will do the work? Demand is going to increase everywhere. This like OTT हो गया, like e-commerce हो गया, all depends on your data centers and cloud. All the data are in now cloud, and data centers are required to have this cloud. And suitable education qualification, again you have to do your PCM, do your engineering और डिप्लोमा में जा सकते हैं, बट इंजीनियरिंग फॉर ए बेटर कैरियर ग्रोथ, either you do computer science engineering, electronics engineering, or BSc in computer science, MCA, because it is a computer based. Maximum case it will be coding, but data center में other demands भी रहेगा for maintenance operations, that will cover in next video. Project ideas, you can do a lot of projects, small projects like पर्सनल वेबसाइट कर सकते हैं फॉर ओपन क्लाउड, डिप्लॉय चैटबॉट्स, एंड इंडिकेटिव सैलरी विल बी अराउंड 4 to 10 lakhs, same as the last one. It will increase. We are talking about futuristic career demands. It will increase definitely. It may double it. So this is all about today's video. The career clusters that we covered today is, first it is your green energy, EV, climate careers. Second one was your second one was robotics, defense, drones, smart manufacturing. Third was semiconductor, embedded systems, and fourth one is your data centers and cloud computing. So ये रहा आज का कैरियर क्लस्टर जहाँ की डिमांड सबका ज़्यादा रहेगा. Now you start thinking of, already we have covered around 7 career clusters. किसमें आपको कैरियर बनाना, it is up to you. If you have any doubt, please contact me. I am available. I will answer within 48 hours. All the love, all the power.